Namaste Sapalai. Welcome in Brittany. In Brittany, my home place in France, west part of France. I recently posted a video to show you a little bit of my place, the Brittany. If you missed it, you can have a look. And but I'm still in Brittany, and right now I'm driving from the south Brittany to the north of Brittany to reach a town, we can say a village, small town called Guingamp. Actually, I'm going to meet Sabitra Bandari, that you know under the name Samba. She's very famous in Nepal. She's a football player that you must know. She plays for the national team of Nepal, and actually she plays in the team of Guingamp, a Nepali player in Brittany. And as you know, me, I'm a Britain guy living in Nepal, so yeah, it was like we have to meet, definitely we have to meet, we have to speak. And yeah, even more I was surprised and very happy that she signed in Guingamp, because Guingamp is a very specific team for me. 10 years ago, when I was working still on the French TV, I did a documentary in Guingamp about the football team. And that year, 10 years ago, Guingamp won the French Cup. So what I did, of course, I contacted the club, and everyone is okay. We are going to speak about football, about Nepal, about Brittany. Yes, everything I like. So yeah, on my way to Guingamp, and still around 40 minutes on the countryside road to reach the small town of Guingamp. Guingamp is a very specific team in France, because it's a village. Actually, it's like 7,000 to 8,000 inhabitants, and in this small town, we can say there is a big football team that won 2 times the French Cup, that play a European Cup, and yes, on my way to meet Samba. So let's go to Guingamp. Christophe, ça va Christophe? Ça va? Ça fait plaisir Christophe. Dis-moi, je me mets où? T'as pas changé, hein? T'as pas changé? 10 ans, ça fait 10 ans. Here I am, Guingamp. Guingamp. Il vit au Népal. Il y a 10 ans, ils avaient fait avec son pote Quentin 52 minutes. Ouais, sur, c'est ça. Ils avaient passé 1 an avec l'équipe pro. Okay. L'année où on gagne la coupe. On gagne la coupe. Ça va? Et toi? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Tanguy. Tanguy. Bonjour. Bonjour, pardon. Tanguy vient du Népal. Ok. Il retourne et vous avez... Ah, sympa aussi. Et... C'est pour ça. pour Samba. Ah, bah, elle est là. Elle c'est Mbappé au Népal. Ah ouais? Samba. Népalais? Samba. Samba. Namaste. Namaste Samba. Sancha Winja. Dikshani. Éclair. Explique-lui ce que tu veux. Tu as mon vidéo qui joue, ça? Unsa? Training qui joue? Ani त्यसपछि त्यो सायद त्यो यदि तपाईलाई अलिकति फ्री टाइम छ हैन त्यो अनि सँगै अलिकति कुरा गर्ने हुन्छ हस् खुसी लाग्यो कोचसँग सोच्नु भयो हुन्छ 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 elle dit il faut demander au coach ah non c'est OK OK bonjour enchanté bonjour ouais Justine je jure. T'es pas obligé de la mettre. Ah non. Bonjour. Attends, Tanguy vient du Népal. Ah Il habite au Népal. Tu peux parler avec Samba? c'est pour ça je suis là pour Samba Bon, toi. Hey, Samba la star. Kuta Duksha नयाँ सुट छ अनि त्यो ब्लिस्टर हुन्छ भनेर नत्र भने दुख्छ
masuk Johnson değişik. अनि चला एकदम सेन्सिटिभ होइन कति भयो नेपाल बस्नु भएको? म अहिले त्यो 5-6 वर्ष भयो ए सबै आउँछ है नेपाली? पुरै आउँदिनँ तर त्यो अलिअलि आउँछ सिक्नुपर्छ होइन अनि घुमिसक्नु भयो अलमोस्ट? धेरै धेरै घुमेको त्यो पश्चिमबाट पूर्वसम्म तपाईँलाई मनपर्छ यता यहाँको कल्चर राम्रो छ, साँच्चै रेस्पेक्ट गर्छ अरूभन्दा। यो मेरो डिस्ट्रिक्ट हो त्यो ब्रिटनी भन्दै तर त्यो merci फ्रेन्च भाषा सिक्दैछ अब टिचर लिउँ कि भने गाह्रो छ Tu me donnes un avant. अभि Je peux tenir les bras. Je peux rester comme ça? Non. pour ma femme, ouais. Mais ouais. Tu joues toi? Tu joues combien de temps? Alors, et tu sais quoi? Don't worry, be happy. Tu connais tes classiques. Okay guys, so I'm on the pitch. The feminine team is going to have a training right now. So it's the beginning of the season. The first game will be only after 2 months. So we can say, all the girls, they are coming back from holiday. Samba is just back from Nepal. So it's really the beginning of the season. We can say physical preparation. So I have the chance to attend to the training. There is a good atmosphere, so we are going to see how Samba is training here. He's from here, Salut. Salut, raconte un peu ce que tu fais. Ce que je fais? D'accord. Tu es d'où toi? Canada, Canada, ok. de loin. Ok. Tu parles, du coup, vous parlez anglais ensemble? Oui. Ok. Et tu parles bien français aussi. Merci. Un petit peu. Tu viens d'arriver à Guingamp? Ouais, c'est ma 4e entraînement. D'accord. Ok, Ouais, ok. ouais. Super. Et avec Samba, ça se passe bien? Oui, très bien. Cool. Oui. Nickel. C'est ma nouvelle pote. C'est ta nouvelle pote? Ouais. Super. Allez, retour terrain, retour ballon. Je vous dis, alternance activité ballon. Programme d'aujourd'hui, vous avez échauffement avec et vos balles. Avec Val, motricité avec ballon. Petit parcours technique, sport aérobie. Ouais, donc de retour à Guingamp, parce que, comme tu sais, j'habite au Népal et puis j'ai appris donc qu'il y avait Samba qui était ici. Elle est arrivée quand en fait à Guingamp? Elle est arrivée en milieu de saison. Je crois que Mathieu Ruffier, le coach, cherchait une joueuse. Il a vu des vidéos. Ok, il a vu les vidéos de Il a Samba. vu des vidéos, mais Ok. c'était pas Samba. Ah non, d'accord. Et en fait, en voyant les vidéos, il s'est rendu compte qu'il y avait un gros potentiel sur une attaquante népalaise. Et c'est comme ça, on abandonne la piste de la joueuse qui cherchait, qui n'était pas forcément une attaquante en plus. Ok. Et on mise tout sur Samba. Mais Samba, il l'avait vu en vidéo? Ouais. Ok, et il a flashé quoi? Ouais, c'est ça. Ok. Les stars, c'est ça. Samba, c'est une fille qui est nature, qui est pleine de vie, donc qui se font facilement dans un groupe. Ok. Il y a la barrière de la langue forcément, puisque tout le monde ne parle pas anglais dans l'équipe. Mais je crois qu'il s'est fait accepter. Et quand on est une bonne joueuse, c'est plus facile de se faire accepter. Oui, c'est ça. On se souvient
d'un tournoi qu'elle a disputé avec la sélection du Népal. Oui, elle a Elle a marqué beaucoup de buts. Et elle a été obligée de quitter l'équipe et pas de disputer la finale. Exactement. Pour venir jouer à Lille, un match hyper important dans la perspective du maintien. Et son entrée en jeu, elle a été déterminante. Ok, parce que tu sais, au Elle a Népal... marqué, elle a offert des ballons de but à ses coéquipières, qui n'ont pas forcément transformé, mais elle a pesé sur le match en très peu de temps, en descendant juste de l'avion, le décalage horaire, c'était magnifique. Exactement. Attention, l'interception de Péniguel qui lance Bandari qui va se présenter dans la surface. Bandari, il a 2-0 pour le Mavant de Guingamp. 2-0 pour les Costarmoricaines sur cette récupération de Péniguel. Et la Népalaise, la machine à but qui fait parler la poudre. 2-0 pour Guingamp alors qu'on est rentré dans le temps additionnel. Et elle a des qualités de vitesse, de frappe, peu de joueuses ont même dans le championnat de France. Ok, d'accord. Parfait. Donc elle amène un peu de Népal à Guingamp. C'est ça, c'est une histoire assez incroyable. Je t'avouerai que mon compte Messenger que je vais te montrer, j'ai que des messages de Népalais. J'étais surpris au moment des matchs, mais inondé de messages. Tu ne peux pas répondre. En plus, moi j'ai découvert qu'il y avait une écriture spéciale que je ne connaissais pas. Je connaissais les caractères chinois cyrilliques. Je ne savais pas que ça existait. Et donc là j'ai découvert, donc je reçois des messages en népalais. Quoi. En népalais. Ah ok, bon, je t'aiderai alors si tu reçois. Il y en a beaucoup, ça prendrait un peu trop de temps. D'accord. Mais nous, à Guingamp, on est assez fiers de ça. On est aussi assez fiers parce que l'histoire est faite de clins d'œil, que toi tu sois aujourd'hui ici, 10 ans après nous avoir suivis lors de notre victoire en Coupe de France. C'était un moment hyper important. J'ai des photos de vous deux avec la coupe. Avec la coupe, ouais. Exactement. Ouais. Exact. De savoir que toi, au Népal, tu as découvert qu'il y avait une Népalaise qui est une star au pays et qui venait à Guingamp, dans un petit village que tu connaissais forcément très bien. C'était un clin d'œil du destin. Exactement. En plus. Mais c'est vrai que rencontrer des gens comme Samba, il n'y a que le foot qui te permet de rencontrer un Népalais à Guingamp. Quel voyage pour elle, quoi. Quel voyage, quoi. Elle a joué à Katmandou, elle est partie en Inde, en Israël, elle arrive à Guingamp. Il n'y a que le foot qui fait ça, quoi. C'est fou, quoi. Mais on voit qu'elle génère une passion, que c'est une fierté du pays. Alors de la croiser ici, dans un univers très calme, on ne peut pas imaginer ce qu'elle représente pour les Népalais. Et on le mesure parce que, encore une fois, je te dis, je reçois plein de messages et on le sait. Mais là, c'est la première fois à travers les filles, l'équipe féminine de Guingamp est connue à l'étranger. Exactement. Pour les garçons, on parle de Guingamp en Amérique du Sud, les gens ils connaissent. Ils disent ah ouais, c'est où jouait Drogba, où jouait un tel. Ouais, vous avez gagné des Coupes de France. C'est surprenant quand tu vas en Uruguay qu'on te le rappelle. mais c'est une réalité. Donc, mais là, pour le coup, c'est la première fois vraiment qu'une féminine nous fasse traverser les frontières. Exactement. En népalais ou... Non, moi je parle pas. C'est Sana, toi. Hein Sana, c'est ça. Sana, enchanté Sana. Okay. Ça fait combien de temps que tu es à Guingamp, toi? Ça fait maintenant plus de 6 ans. Ah, ça fait 6 ans, d'accord, ok. Je suis arrivée en 2018. Ah ouais, d'accord, donc tu connais bien le club. Exactement. T'es l'ancienne en fait. Je suis une ancienne. D'accord. Du coup, c'est toi qui as un peu accueilli Samba alors, du coup?
Ouais, elle est arrivée l'année dernière, une nouvelle joueuse népalaise, donc on sait que c'est toujours difficile d'arriver comme ça dans un nouveau pays, un nouveau club. Faut savoir mettre ces joueuses à l'aise pour qu'elles expriment leur potentiel. Exact. Donc non, on l'a bien accueillie et je trouve qu'elle s'est super bien adaptée en arrivant direct. Elle parle anglais. Ok. Donc c'était pas facile, mais il y avait quand même pas mal de joueuses qui arrivaient à parler anglais et qui a su la prendre sous leur aile, ouais. C'est ça. Ok. Et parce que on se rend pas compte, mais arriver de Katmandou à Guingamp, même si elle est passée par d'autres étapes dans sa carrière, mais Guingamp c'est vraiment le petit village, quoi. Donc Ben, en fait, Guingamp, c'est un petit village, je crois qu'il y a plus de 6 à 8 000 habitants. C'est ça, ouais. Donc ça doit changer du Népal. Le Népal, pardon, c'est un grand pays, donc je pense qu'elle a dû être un peu choquée. Ah ouais. Mais voilà, je pense qu'elle est venue pour le foot aussi, pour découvrir aussi un autre football. Et niveau football, tu sens qu'elle a du potentiel? Ouais. Franchement, c'est une joueuse qui va vite, qui est très à droite devant le but. Et aussi, elle a une qualité d'appel aussi qui est exceptionnelle. Donc, ça nous elle aime bien la profondeur, en fait. Ouais, elle aime beaucoup la profondeur. C'est beaucoup d'appels arrondis. Donc, je pense que c'est un profil qu'on n'avait pas forcément, un profil atypique. Donc, ça nous amène de la profondeur et ça apporte de la variété. Donc, c'est un plus pour nous. Toi, tu joues quel poste? Milieu de terrain. Milieu de terrain. Donc, c'est toi qui lui fais les passes, quoi. Ouais, j'essaye. Après, on essaie un peu de trouver des automatismes parce que voilà, elle est arrivée en janvier l'année dernière. Ouais, c'est tout récent, quoi. Voilà, donc il faut savoir s'adapter avec ses appels, quels sont ses points forts. Donc là, j'essaye un petit peu de bien la connaître même en dehors, comme ça, c'est plus facile pour nous deux. Elle vous fait pas goûter un peu la nourriture népalaise? Non, elle nous a pas encore fait goûter. Ah, il faudra tester. On attend ça. Tu lui diras de te faire les momos. C'est quoi? Les momos, tu sais, c'est un espèce de ravioli avec une farce dedans de viande ou végétarien. Okay. Et c'est un peu là. Si tu lui parles des momos, elle va comprendre tout de suite. Je vais la taquiner. Ouais, les momos, c'est typique Népal, quoi. Bon, on vous souhaite une belle saison. J'espère que tu lui feras plein de passes D. J'espère aussi et qu'elle marquera beaucoup de buts aussi, parce que c'est une belle personne aussi, de d'être une bonne joueuse. Et comment tu trouves son intégration, une Népalaise à Guingamp, dans un petit village breton? L'intégration au sein du groupe, bien. Ok. Même s'il y avait la barrière de la langue. Ok, ouais, c'est pas forcément. Mais par sa joie de vivre, la personne qu'elle est, en fait, elle est beaucoup dans l'humain, elle se rapproche quand même des Bretonnes qui aiment bien aider l'autre. C'est vrai, ça. Donc ça a matché. Et puis elle arrive toujours avec le sourire, elle est quand même très professionnelle. Mais en tout cas, on sent qu'il y a l'aspect hiérarchique. Okay. Le coach, le staff donne une info, j'écoute. Okay. J'écoute, j'ai besoin de comprendre aussi. Elle sait qu'elle a besoin de faire un peu plus, parce que le niveau est un petit peu plus élevé que ce qu'elle a connu. Donc elle est très concentrée, très à l'écoute. Et quand bien même elle a conscience de ses qualités, elle cherche à progresser tout le temps. Ouais. Tu penses que là, parce que là, elle a eu une petite phase d'adaptation, on va dire, en arrivant en janvier. Là, cette saison, elle peut peut-être, maintenant qu'elle connaît un peu mieux, elle peut peut-être passer un palier. C'est nos attentes. C'est vos attentes, ouais. C'est nos attentes. C'est vrai que sur les 5-6 premiers mois où elle a été là, la barrière de la langue. Ouais, bien sûr. Et puis même, elle changeait du tout. Ah bah ouais. Moi, je connais dans l'autre sens, donc c'est pas facile, il faut un peu de temps. Ouais. Donc voilà, le coach qui vient d'arriver la connaissait, mais il la découvre. Là. Il la découvre. Ouais. Il est si bien dans l'humain que dans le foot un peu plus précisément. Okay, il en est content de ce qu'il voit. Okay. Donc maintenant c'est à elle de se mettre entre guillemets au pli du foot européen. Ouais, bien sûr. Où il y a un petit peu moins d'espace, où ses qualités athlétiques sont un petit peu moins. Ses qualités athlétiques sont un petit peu moins faciles à exprimer. Parce qu'elle aime bien la vitesse. Elle, exactement. Ça, exactement. Et maintenant, il y a le sens du timing à trouver, l'aspect tactique européen. Où sur 4-5 mois, ça a été compliqué. Mais là, elle nous a promis d'apprendre à parler français. Ok. No? Yeah. You? Yeah. Okay, we go together outside. Yeah? Just for lunch. Yeah. Not too much time. I don't take too much time. Yeah. I know you have many things to do.
Pourquoi tu parles pas népalais? Pour qu'ils comprennent. Ils se débrouillent. Ils se débrouillent. En népalais, j'ai- धेरै sama लाग्दैन त्यो खाने बेला मात्रै. You know, they speak Nepali very well. Christophe, qu'est-ce que tu fais? On se dit au revoir? Ouais. On se dit au revoir. Ouais. Allez Christophe. Merci pour tout. Hein. Samba vient avec nous. Voilà, ok. Merci pour tout Christophe. Au revoir. Au revoir Kenavo. 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 Kenavo, Kenavo त्यो हाम्रो भाषा ब्रिटानीमा. Brittany. हाम्रो त्यो same like Rai, Tamong, हाम्रो भाषामा au revoir is Au revoir. Kenavo. Kenavo. Yes. Oh, Kenavo or Aqua is the same. Yes. Ah. Yes. Kenavo. ल बल्ल बेट भयो. बल्ल भेट भयो बल्ल बेट त्यहाँदेखि भयो. खुसी लाग्यो. खुसी लाग्यो त्यो गाउँमा सानो छ र सानो एकदमै सानो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? ग्याङ्गो यस सानो पिस आनन्द छ आनन्दले केही कुराको पनि टेन्सन हुँदैन हो नि राम्रो छ नि त सिट अनि के लाग्छ त्यो गाह्रो छ त्यो फ्रान्समा कि ल्याङ्ग्वेज वाइज चाहिँ अलिक गाह्रो छ ल्याङ्ग्वेज गाह्रो छ मैले सुनेको के भन्छ त्यो ट्रेनिङ बेला तपाईँले भनेको त्यो bien joué के भनेको ça vient yeah थोरै थोरै आउँछ अब फ्रेन्च सिक्नुपर्छ अहिले अब टिचर दिने भनेको छ ओके क्लबसँग क्लबले चाहिँ टिचर दिने अरे त्यस पछाडि चाहिँ 2 महिना क्लास हुन्छ त्यस पछाडि सक्यो फ्रेन्च एकदम त्यो गाह्रो भाषा हो नेपाली पनि उच्चारण एकदम गाह्रो हो नि यहाँ भित्रबाट बोल्नुपर्छ नि त त्यो के भन्छ गाठीबाट this one is difficult yes like FR or PR when you say pr म त सक्दैन एकदम गाह्रो छ तर मलाई पनि गाह्रो थियो त्यो नेपाली सिक्नको लागि नेपाली अहिले पर्फेक्ट है पर्फेक्ट होइन पुरै आउँदैन तर धेरै गर्छु तर या मनपर्छ किनकि यदि त्यो म काठमाडौँमा बस्छु त्यो अझै सजिलो छ होइन त्यो नयाँ भाषा सिक्नको लागि त्यो मान्छेसँग कुरा गर्ने तपाईँले पनि त्यो अहिले त्यो फ्रेन्चमा बस्नुहुन्छ बिस्तारै एडजस्ट भइन्छ एडजस्ट हुन गाह्रो हो एडजस्ट हुनलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ एडजस्ट भइसकेपछि त त्यो एउटा फ्लो आइहाल्छ नि आफै अनि त्यो अरू केटीहरू राम्रो छ एकदमै सहयोग गर्छ सपोर्टिभ छ अनि त्यो एउटा सबैसँग प्रायः जस्तोसँग गाडी छ नि त हजुर अनि ट्रेनिङ जानलाई आउनलाई प्रब्लम हुँदैन अरू भन्दा नि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ अनि बाँकी अलिकति सबै पोजिटिभ माइन्डसेटको छन् ओके किनकि त्यो एउटा चाहिँ मित्रता चाहिँ राम्रो छ कि एज अ फ्रेन्ड एबिसिडी जोसुकै होस् त्यो छैन कि सबैलाई इक्वल बिहेभ छ त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ कुल यो महत्त्वपूर्ण छ त्यो त एज अ टिममा त्यो चाहिँ चाहियो हो नि अब कता जाने अहिले हामी लन्चको लागि अहिले तपाईँलाई सबै त छ यता गाउँमा यो एरिया त मेरै हो तर म धेरै सबैतिर छिरेको त छैन तर अहिले चाहिँ यो समर सिजनमा अनि फ्रेन्च खाना मनपर्छ तपाईँलाई फ्रेन्च खाना हजुर ब्रिटानी खाना ठिकै दाल भातको याद आउँछ कि म आफै बनाउँछु नि ए ल ओके नत्र भने सक्दैन ओके हुन्छ फ्रेन्चमा सोध्नु पर्ला म फ्रेन्च Bonjour. On est deux. T'es pas réservé? Non, on n'a pas réservé. C'est compliqué. Non, c'est bon, j'ai des tables qui sont libérées. Ok. Je vais avoir celle-ci si vous voulez. Ok, très bien. It's okay? Ok. Yes, sure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et la formule du jour qui est sur la grande ardoise. Ok. My translation गर्छु. हुन्छ Okay. Shrimp.
shrimp? Shrimp cho seafood. Seafood. Yo, Merci beaucoup. Seafood मिल्दैन? Seafood मलाई स्मेल अलि ठीक लाग्दैन। तपाई खानुहुन्छ होला हैन? म धेरै खान्छु। म ब्रिटेनमा जन्मेको थिएँ। त्यो समुद्रको किनारमा थियो। त्यो माछा, seafood सबै खान्छु। तर ताछ मलाई त्यो तपाई seafood खानु? हैन त्यो अरु छ त्यो यो seafood हैन? हजुर। यो seafood, यो आस्को मासु। आस्को मासु, ओके। आस्को मासु मिल्छ। खान्छु। आस्को मासु फ्रेन्च फ्राइसँग। फ्रेन्च फ्राइसँग। magret de canard। magret de canard। यो एकदम मिठो। यो खाऊ? हुन्छ। अनि यसमा फ्रेन्च फ्राई आउँछ हैन? फ्रेन्च फ्राई आउँछ। तपाई त्यो फुटबल कहिले सुरु गरेको? मैले? फुटबल त सानोदेखि नै हो। सानो बच्चा बेलादेखि नै। कता काठमाडौँमा? हैन, लमजुङमा। लमजुङमा ओके। लमजुङमा सुरु गरे। खेल्नलाई साथीहरू थिएन, दाइहरूसँग खेल्थे। दाइहरूसँग ओके। दाइहरूसँग खेल्यो अनि त्यही पनि फ्री टाइममा खेल्ने ठाउँ हुन्थेन नेपालमा खासै इनफ ग्राउन्ड पनि छैन नि त। अनि त्यही हो दाइहरूसँग खेलियो हुर्कियो। अनि सानोमा बल पनि हैन, त्यो एउटा चाहिँ कागजको बल बनाएर खेलिन्थ्यो। मोजा हो नि मोजा कागज हालेर बल बनायो त्यसरी। गाह्रो थियो एकदमै गाह्रो थियो। सानोमा त खेल्ने ग्राउन्ड हुन्थेन, बल हुन्थेन, जर्सी थिएन। त्यसपछि बिस्तारै दाइहरूसँग खेले अनि त्यस पछाडि खेल्दा पनि एउटा त्यो धेरै लेडिजहरू हुन्थेन नि त, केटी साथीहरू थिएन, 2-4 जना हुन्थ्यो। तर पनि दाइहरूसँग खेलिन्थ्यो अनि लोकल टुर्नामेन्ट भयो गाउँमा। ओके। अनि त्यो टुर्नामेन्टमा त्यो आफू पढ्ने स्कुलको साथीहरूलाई लिएर गएँ। अनि लिएर गइसके पछाडि त्यहाँ त्यो टुर्नामेन्टमा पार्टिसिपेट गऱ्यौँ। अनि पार्टिसिपेट भइसकेपछि त्यो टुर्नामेन्ट जित्यौँ पनि, लोकल टुर्नामेन्ट। अनि त्यो गेम खेलाउनेमा चाहिँ नेपालको नेसनल रेफ्री शुक्र दाइ जानुभएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ काठमाडौँ जाने हो खेल्नको लागि भनेर चाहिँ मलाई प्रिफर गर्नुभयो। त्यो गरिसकेपछि मैले चाहिँ हुन्छ दाइ भने। अनि त्यसको 1-2 महिना पछाडि चाहिँ 2014मा अनि म काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गएर चाहिँ एपिएफ क्लबमा जोइन भएँ। अहिले पनि एपिएफ क्लबमै छु, त्यहाँको जब होल्डर भएर पुलिसमा। अनि एपिएफमा लागे पछाडि एकदम टु बी अनेस्ट एपिएफको त्यो एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, प्लेयरको इन्भाइरोमेन्ट, क्लब मेम्बरहरूको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सबै कुरा राम्रो छ। इभन अहिले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। म यहाँ आउँदा पनि त्यहाँको सरहरूले, अफिसमा काम गर्ने जुन अफिसरहरूले। अनि त्यसपछि इन्डियामा गएको होइन? सुरुमा स्टार्टिङमा चेन्नईको क्लबमा खेलेँ। अनि त्यो सिजन पनि च्याम्पियन भयो। त्यस पछाडि आफ्टर द्याट केरला गएँ। केरलामा गोकुलममा 2 सिजन जितेँ त्यहाँबाट। टोटल 3टा टाइटल छ इन्डियन वुमेन्स लिगमा, जस राम्रो गरेँ। साउथ रिजनको फुटबलमा चाहिँ जस मैले जति गर्नुपर्ने हो मैले गरिसकेँ जस्तो लाग्छ। त्यस पछाडि इजरायल गएँ। अनि इजरायलमा 4 महिना खेलेँ। 4 महिनामा जस लिग राम्रै थियो। हामी चाहिँ जस्ट लिगको 3-4वटा म्याच खेलेका थियौँ। त्यस पछाडि त्यहाँ वार भयो। वार पछाडि म नेपाल फर्केँ। नेपाल फर्किसके पछाडि फेरि यहाँ फ्रान्सको लिगको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी मिल्यो। जस यहाँको फुटबल, युरोपको फुटबल टोटली चेन्ज, ल्याङ्ग्वेज, फुटबल अनि एउटा चाहिँ टेक्निकली वाइज, ट्याक्टिकली एकदमै चेन्जेस छ यहाँ। किनकि यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, यहाँको मान्छेको जो एउटा चाहिँ डिसिप्लिन, अनि यहाँको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ इनसाइड द फिल्ड र आउटसाइड द फिल्ड जुन एउटा मान्छेको त्यो एउटा चाहिँ वेल इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यो एकदमै राम्रो छ यहाँ। लामो यात्रा एकदमै लामो नेपाल फुटबलले गर्दाखेरि। अनि लेभल कस्तो छ फ्रान्समा तपाईको विचारमा? एकदमै हाई लेभल छ किनकि वर्ल्डकै टप 3-4 टप
3-4 लेभलको लिग छ यहाँको होइन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै एभ्री म्याच हामीलाई चाहिँ टफ छ च्यालेन्ज छ अनि सुरुमा गाह्रो थियो 1 महिना त टोटली यहाँको चाहिँ वेदर चिसो too much change वेदर वाइज अनि ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ प्रब्लम हुने अनि त्यस पछाडि अनि लेभल पनि फुटबलको लेभल यहाँ एकदमै हाई छ अनि बिग शक त्यो मिटअप गर्नलाई एकदमै गाह्रो भयो के छ अनि नेपालमा अलमोस्ट सबै ठाउँ घुमिसक्नुभयो म धेरै घुमेको छु हिमाल तराई जानुभएको छ तराई धेरै गर्मी छ है लास्ट एकदमै म जनकपुरमा गएको छ असार महिनामा 45 डिग्री त्यस्तै 45 यो बेलामा एकदमै गाह्रो थियो नत्र भने पश्चिममा एकदम राम्रो थियो कर्णाली खोलाको किनारमा जानुभयो है अनि पूर्वमा धेरै धरान इलाम पनि जानुभयो जापा अब जाने पर्ने ठाउँ कहाँ बाँकी छ चिलिचो जानुभयो हजुर भिडियो खिचेको अर्को सोसाइटीमा तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ देखाइरहनु भएको छ अनि त्यो हाम्रो नेपालको कल्चर सोसाइटी अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ घुम्न लायक ठाउँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ टुरिस्ट एरियालाई पनि प्रमोसन गरिदिनु भएको छ त्यसले देख्दा पनि मान्छेको तपाईँको यहाँको फ्रान्सको मान्छेहरू होला नि अभियसली यहाँको मान्छेले पनि त्यहाँ अब हाम्रो देशमा गएर घुम्नलाई एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिइरहनु भएको छ फ्रेन्च खाना ठिक छ सेम लाइक नेपाली नेपालमा पाउँछ यो पनि पाउँछ यो अलि डिफ्रेन्ट तरिकाको आउँछ आजको मासु पाउँछ नेपालमा पाउँछ म तराईमा खाएको तराईमा थियो होली बेला यस तारु मान्छेसँग तारु आजको मासु थियो धेरै मिठो थियो Bon appétit, merci. Merci beaucoup, Samba. धेरै स्पाइसी छैन पिरो चाहिन्छ नै पिरो खाइदैन साँच्चै ओके स्वास्थ्यको लागि ए हो नि tu veux du pain tu sais comment on dit que bon ça पाउरोटी नेपालमा इंग्लिशमा ब्रेड फ्रान्समा pain du pain En France, le pain, c'est très important. धेरै महत्त्वपूर्ण छ फ्रेन्च मान्छेहरूलाई यो एकदमै महत्त्वपूर्ण त्यो तपाईलाई ग्याङगम मन पर्छ सहर सानो छ राम्रो छ टिपिकल हाउसेस छ सबै पुरानो मान्छेहरू छ यहाँको कल्चरलाई एकदमै फलो गर्छ इभन बाटोमा हिँड्दा पनि बोजू भनेर एउटा रेस्पेक्ट गर्छ नचिनेको मान्छे पनि नचिन्दा पनि नचिनेको मान्छेलाई नि अब मैले पनि भन्छु उनीहरूले पनि भन्छ अब कतिपय ठाउँमा हिँड्दै एक सुरले हिँड्दैछ नि उनीहरूले बोजू भन्छ सानो उमेरदेखि जो एउटा चाहिँ ठुलो उमेर समूहको मान्छेसम्म त्यो एउटा चाहिँ बाटोमा हिँड्दा पनि बोजू भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ हाई हेलो जस्तो होइन त्यो चाहिँ छ यहाँ तपाईँको सबभन्दा ठुलो सपना त्यो फुटबलको लागि के हो अनि तपाईँको अनि जीवनको सपना यस्तो हो परिवारलाई सधैँ खुसी राख्ने एउटा चाहिँ त्यो हुन्छ लाइफको एउटा चाहिँ पार्ट हो अनि एज ए फुटबल प्लेयर मेरो चाहिँ सपना भनेको साउथ रिजन फुटबलमा च्याम्पियन हुने त्यति हो अनि ड्युरिङ द फुटबल करियरमा एउटा चाहिँ युरोपको सपना थियो युरोपको सपना बिस्तारै फुलफिल हुँदैछ सो त्यसको लागि नै हो अब मेन भनेको एज अ फुटबल प्लेयर साउथ रिजनमा च्याम्पियन हुन पाऊँ भन्ने एउटा अहिले त्यो बुवा आमा खुसी हुन्छ होइन खुसी हुनुहुन्छ अभियसली खुसी हुनुहुन्छ किनकि अब सानो त्यो एउटा चाहिँ ग्रामीण भेगदेखि अहिले चाहिँ एउटा सहर हुँदै अहिले अर्को ठाउँमा आएर खेल्ने एउटा चाहिँ अवसर छ होइन त्यो एउटा जो कोहीले पाउँदैन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि जस्तो एकदमै खुसी हुनुहुन्छ मम्मी बुवा
म एकदमै खुसी लाग्यो किनकि तपाईँ त्यो ब्रिटानीमा फुटबल खेल्छ हाम्रो जर्सीको लागि तपाईँ फाइट गर्छ र एकदमै तपाईँ हाम्रो नेपालमा हाम्रो गर्व हो धेरै मान्छे त्यस्तै सोच्छन् हो नि एकदम गर्व लाग्छ सबै मान्छेहरूलाई धेरै गर्व लाग्छ तपाईँ त्यो नेपालको झन्डा राख्ने संसारमा अनि मेरो होम टाउनमा ब्रिटानीमा त्यही भएर म एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँले त्यो नेपाली मान्छेहरूलाई त्यो तपाईँको सन्देश के हो मेरो सन्देश जति पनि नेपालमा बसेर या देश विदेशमा जहाँबाट पनि मलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ नट ओन्ली मी अनि नेपाली फुटबललाई चाहिँ माया गर्दै हुनुहुन्छ भने सपोर्ट नै ठुलो कुरो हो हामी एज अ प्लेयरको लागि अनि जति पनि सपोर्ट छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच अझै भोलिको दिनमा साथ सपोर्ट गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो चाहिँ च्याङ्गे दाईको चाहिँ युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनुहोस् किनकि हाम्रो देश विदेशमा छरिरहनु हुने नेपाली कल्चरको बारेमा अनि थ्याङ्क यू दाई खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सम्बा Okay guys, this is it. It was really nice to meet Samba, our Nepali jewel, here in Brittany, in my district. So it's really amazing for me, and it's really nice from her because she has not so much time, and yeah, everyone made it possible. I'm also very thankful to the club of Guingamp, En Avant Guingamp, and specifically to Christophe Gauthier, who made this meeting possible. I wish Guingamp will make a great season. Samba, you will score many goals and continue like you do. You are putting the Nepali flag on the map, especially here in my place, and for me, there are no words to express what it means for me. So thank you, and I hope you enjoy having some news from our Samba here in Brittany. And yeah, we wish you all the best for your career and for your life. Yeah guys, for me it's time to come back to Kathmandu, so I see you very soon. Once again, Jai Nepal, Jai Brittany. See you guys.